Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोस गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोस रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें कूलिंग ड्यू टू एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन विषय रे पढिबा आमे थियोरेटिकली जानिला जे एब्सोल्यूट टेम्परेचर रो लोअर वैल्यूटा 0 डिग्री केल्विन ही आमे पाई परिबा ताठू आउ कम टेम्परेचर को आमे पाई परिबा नाही ओके सो इट वाज नोटिस्ड दैट देयर इज ए लोअर लिमिट फॉर द टेम्परेचर स्केल व्हिच इज 0 डिग्री केल्विन ओके तेबे हायर टेम्परेचर जदि कहबा सेमती किछि लिमिट नाही हायर टेम्परेचर पई हमें बहुत ही बेसी हायर टेम्परेचर को जाई परिबा किंतु लो टेम्परेचर पई गोटे लिमिट ही अछि ओके एंड द लोएस्ट टेम्परेचर जेमती कहली इट करेस्पोंड्स टू 0 डिग्री केल्विन दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस अराउंड ओके इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तो एटा आसिला थियोरेटिकली सो एक्सपेरिमेंटली ए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को पाइबा पई बहुत गुडाए प्रयास करा गला ओके so the temperature below 0 degree centigrade can be obtained with the help of freezing mixture okay आउ -65 डिग्री सेल्सियस को हमें पाई परिबा with KOH and ice okay now with the liquefaction of gases temperature lower than -65 degree Celsius can be achieved and with liquid helium यार टेम्परेचर बहुत कम थाए बॉइलिंग अंडर नॉर्मल प्रेशर आमे पाखापाखी टेम्परेचर पाई परिबा -268.9 डिग्री सेल्सियस ओके सो by boiling liquid helium under reduced pressure temperature within the order of 1 Kelvin can be obtained किंतु आमर गोल है 0 डिग्री केल्विन हमको पाइबार अच्छी ओके सो विथ दिस लिक्विड हीलियम आइसोटोप He3 which is boiling under reduced pressure पाखापाखी टेम्परेचर पाई है 0.4 डिग्री केल्विन पर्यंत पहुँची गला ओके नाउ the temperature below this 0.4 Kelvin can be reached by this adiabatic demagnetization method okay and it was suggested by Debye and Giac okay so let us study briefly about this adiabatic demagnetization okay so जेमती कहली Debye and Giac and तांको सहित McDougall were able to produce the temperature below 1 degree Kelvin with the help of a salt which is gadolinium sulfate okay gadolinium sulfate eta hochi gote paramagnetic substance okay now Haas and Kramers used the magnetic balance for a number of paramagnetic substances and they found that potassium and chromium eta hochi paramagnetic substance तार जदि आमे एलम नेबा एलम माने आमे ओडिया रे कहले फिटकिरी को बुझो ओके जनरली जो आमे फिटकिरी यूज करू दैट इज नोन एज पोटास एलम सो it will give a much lower temperature okay now if during this process the total heat is kept constant यदि heat constant होची माने process टा हे गला adiabatic then due to rise in internal energy its temperature must rise on the other hand जदि आमे ए प्रोसेस रे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिबा माने आइसोथर्मल हे गला प्रोसेस टा देन सम हीट मस्ट लीव द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तो हीट जदि बाहरी गला निहाती भाबरे एंट्रोपी टा डिक्रीज करिवो एंट्रोपी मस्ट फॉल so the substance will definitely be cooled okay so it get demagnetized on isolating the system and switching off the magnetic field okay so in this case the work which is done by the substance is taken from the internal energy of the substance
so that jemti कहली temperature substance रो कमिबो, it will be cooled. So एठी देखो फिगर रे दुईटा आमे देखुछु लेफ्ट साइड फिगर देखो गोटे एटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस निया जाईची. लेफ्ट साइड फिगर होउची इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एठी ए जो एरो मार्क गुडा दिया जाईची एटा होउची तारो magnetic dipole गुड़ा, okay, which are randomly oriented, that means there is disorder arrangement, okay, किछि भी तांको भितरे ऑर्डर नाही. किंतु जेतेबेले एबे राइट साइड फिगर को देखो आमे गोटे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करिबा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पई, तेणु एई मैग्नेटिक डायपोल माने अलाइन करि जिवे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड. सपोज बाहर आमे एई डायरेक्शन रे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करछु, ताले एई डायपोल भी सेही समान डायरेक्शन रे align କରି jibe, that means they will have an orderly arrangement. Okay, thus from these two figure we can conclude that when paramagnetic substance is in unmagnetized state mane eta, then there is perfect disorder within the substance, and when it is magnetized, this one, then we are achieving a complete order state. Okay, in other words, एबे जदि यार एंट्रोपी हिसाब रे हमें कहिबा, द एंट्रोपी S is greater than 0 for unmagnetized state and it is equal to 0 for the case of magnetized state. Okay, thus the process of magnetization means change from disorder state माने first one to the order state, second one जो ऊपर हमें फिगर देखिला, and the process of demagnetization माने ठीक तार उल्टा, it means change from order state to disorder state. Okay, आ गोटे जिनस मन रख, ए जो मैग्नेटिक कूलिंग प्रोसेसटा होची cyclic process नुहे एटा. Okay, it is not a cyclic process, rather it is a one shot operation, थरे पई ही एई ऑपरेशन टा कैरी आउट हे परिबो, and the entire process of heating due to magnetization or cooling due to demagnetization of a paramagnetic substance याकू कुआ जाए thermomagnetic effect बा magneto-caloric effect. Okay, and this magneto-caloric effect can be used to obtain extremely low temperatures, which is well below 1 degree Kelvin, as well as ranges used in common refrigerators. This is known as magnetic refrigeration. Okay, and the magneto-caloric effect was discovered by E. Warburg in 1881 in case of pure iron, and the size of this effect has been around 0.5 to 2 degrees Celsius per Tesla change in the magnetic field. Let us now see the method in case of this adiabatic demagnetization. So for this let us go to the figure. एटी figure रे जा describe मु एटी लिखा हिची एटा को describe करूची. So मु एको टिके छोटो कर दोची. So this is the figure, the arrangement of the setup. So एठी आमे गोटे paramagnetic salt नेचु, this one, okay, in the middle, which is in form of gadolinium sulfate जेमति हम ऊपर देखुतिला. Okay, अच्छा, this salt is suspended by means of a silk thread. Okay, एटा गोटे silk thread द्वारा suspend हे कि अछि in a vessel A हे गला गोटे vessel, ए गोटे vessel भितरे आमे याको रखिछु, and this vessel is surrounded by liquid helium. Okay, liquid helium रे एटा surround करी कि अछि. Now the liquid helium which is taken in the Dewar flask D1. Okay, এই होची Dewar flask D1. Okay, गोटे flask भितरे आमे ई liquid helium नेचु, याको कोन करिबा आमे boil करिबा under reduced pressure जेंति आमे ऊपर देखुतिला. Now this flask is further surrounded by another Dewar flask D2. Okay, आ गोटे Dewar flask. अच्छा, এই D2 रे कोन अछि, it is containing liquid hydrogen. Okay, एटा आसिला liquid helium, एटा आसिला liquid hydrogen. Okay, now the salt is in contact with the helium gas obviously. Now एबे देखो एठी both side रे आमे दुईटा strong पोल पीसेस नेचु गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट रो. ओके, आ ई सेटअप को ई दुई पोल पीसेस रो मझी रे रखिछु सो दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हबो. आ एठी आमे पाखा पाखी 30,000 गॉस माने अराउंड 3 टेस्ला
रो मैग्नेटिक फील्ड आमे अप्लाई करिबा ओके now when the magnetic field is switched on जेतबेले आमे याकू अप्लाई करिबा then the specimen माने ए जो salt टा it will be obviously magnetized एटा जेहेतु गुटे paramagnetic substance so the heat due to magnetization is removed by first introducing hydrogen gas into this vessel A okay या भीतर को हमें hydrogen gas प्रथमे enter करिबा so that एठी हीट टाकू ये रिमूव करि नबो एंड देन पंपिंग इट ऑफ ओके ए हाइड्रोजन गैस को प्रथमे या भितर पसेबा तापरे पुनी बाहर कर दबा ओके विथ हाई वैक्यूम पंप so that the specimen is thermally isolated ओके तापरे कोन करिबा ए स्पेसिमेन रे देखा जिवो जे इट इज पिकिंग अप the temperature of liquid helium because liquid helium को सराउंड करके रखी छी ओके अच्छा now the specimen and liquid helium will be at the same temperature now magnetic field एबे हमें स्विच ऑफ कर दबा ओके स्विच ऑन करतला प्रथमे एबे स्विच ऑफ कर दबा ताले एबे कोन हो उल्टा प्रोसेस हो मैग्नेटाइजेशन होतला स्विच ऑन रे ऑफ कर देले स्विच ऑफ कर देले डीमैग्नेटाइजेशन हेबो व्हिच इज adiabatic demagnetization because the specimen is isolated okay acha now the adiabatic demagnetization of the specimen takes place and obviously the temperature falls down okay now the temperature of the specimen is determined by fitting a coaxial solenoidal coil okay गोटे solenoidal coil आमे coaxial put करिबा आउ सेठी आमे ए टेम्परेचर को मेजर करिबा okay so by measuring the self inductance and hence susceptibility of the substance at the beginning and at the end of the experiment we can measure the temperature which can be calculated by using the Curie law. Curie law को is susceptibility chi is inversely proportional to the temperature okay here C is the Curie constant okay so this is all about the figure now Hayes in 1944 has होचंती जने scientist he was able to produce the temperature up to 0.002 Kelvin माने 0 Kelvin रो बहुत निकटतर okay using a double sulfate of potassium and aluminum तापरे Clark Stanland and Gotter they used powder mixture crystal of chromium alum and aluminum alum and went down to a temperature of आउरी कमिगला 0.0014 Kelvin okay so this is all about the method now let us see the theoretical part of this adiabatic demagnetization तो आमे जेमती देखुतला ऊपर फिगर रे जेतेबेले गोटे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आमे गोटे मैग्नेटिक फील्ड रे रखुछु सपोज मैग्नेटाइजिंग फील्ड हला H then the elementary magnetic dipoles will be aligned parallel to the direction of field okay now the magnetic moment per unit volume which is produced ताकू आमे कहिबा intensity of magnetization capital I केतरा बहिरे याकू capital M भी लिखा ही थाए okay suppose एठी जो magnetic field H अछि which is changing this value by an amount di okay intensity of magnetization रो value को di amount रे change कर दोची ताले आमे जानिछु the magnetic work done on the substance यार value हिजबो HDI okay so the work done by the substance केते हला minus HDI okay on the substance plus HDI नेला by the substance एठी minus HDI ताले पुणी आमे जदि प्रेशर और वॉल्यूम हिसाब रे देखिबा द वर्क डन बाय द सब्सटेंस इन चेंजिंग इट्स वॉल्यूम एटा आमे जानिछु dw रो वैल्यू हुए pdv ओके सो लेट द वर्क डन बाय द सब्सटेंस ये हेगला dw टोटल टा ताले pdv माइनस hdi हबो ओके याकू आमे पुट करिबा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हिच इज dq इक्वल टू du प्लस dw सो एटी वैल्यू आमे पुट कला नाउ at very low temperature आमे जानिछु सबु जेते सब्सटेंस टा सॉलिड फॉर्म रे ही थाए जनरली ओके तेणु करी वॉल्यूम टा अनचेंज रहइबो इन केस ऑफ ए सॉलिड सो वी कैन टेक द change in volume dv to be nearly equal to 0 that means a जो p dv term टा 0 ही जिवो that means dq रो वैल्यू du minus hdi हबो एबे रिप्लेस करिवा dq को tds रे
ताले TdS इक्वल टू du माइनस HDI पुणी आमे जानिछु इन केस ऑफ ए गैस TdS रो वैल्यू du प्लस PdV हुए सो ये दुईटा इक्वेशन 90 और 91 को आमे एबे कंपेयर करबा एटा ओके सो एठी कंपेयर कले जणा पडुची जे P को आमे लिखि परिबा इक्विवेलेंट टू माइनस H आ V को लिखि परिबा इक्विवेलेंट टू I से जिनस एठी लिखा जाईची द इक्विवेलेंस बिटवीन इक्वेशन 90 एंड 91 एठू आमे रिप्लेस कर देला P by minus H V by I okay then in that case we can use the Maxwell's thermodynamic relation. This is the third relation I think. Okay, del T by del P at constant entropy is equal to del V by del S at constant pressure. So replacement हमें एटा जो ऊपर देखिला ताकू कर दबा. Okay, now याकू एबे हमें solve करिबा. Okay, so solve करिबा देखो केमती एठी minus del T by del H अछि. Okay, जार वैल्यू हमें पाइचू equal to del I by del S. Okay, आमे कोन करिबा एठी जो RHS रे del T आउ del T डिवाइड कर दबा तळे ऊपर पुणी नेक्स्ट स्टेप रे कोन करिबा T को मल्टीप्लाई करिबा तळे ऊपर ताले एबे देखो ए जो डिनोमिनेटर इरा आसिला T del S by del T this is nothing but CH कोन एटा होची स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of the substance at constant magnetic field H. Okay, so आमे एबे लिखि परिबा del T by del H to be equal to minus T by CH into del I by del T at constant H. Okay, मने रखो एटी जो CH एटा एक्चुअली CV लिखा हबार थिला किंतु आमे V को नेचु इक्विवेलेंट टू H तेणु करी CH लिखा होची. Okay, so for a small change in DH in the magnetic field we can write dt to be equal to minus T by CH del I by del T into DH माने ये जो del H टा आर पट को पळी आछि आ हमें एठी पार्शियल न नै कि एठी कंप्लीट डिफरेंशियल नीचू. ओके अच्छा now in case of paramagnetic substance since its magnetization is loosed in case of heating ओके जदि आमे गोटे paramagnetic substance को हीट करिबा ताले तार मैग्नेटाइजेशन कमी जाए तेणु करी ए जो del I by del T अछि एटा सब बळे नेगेटिव हेबो. ओके टेम्परेचर बढ़िले I कमिबो टेम्परेचर कमिले I बढ़िबो. Therefore it can be concluded from equation 92 that an increase in the magnetic field H that is dH is when positive then it will result in an increase in the temperature that is dt will be positive and conversely जेतोले dH negative हेबो माने जेतोले H decrease करूची ताले temperature भी कमिबो so that dt will be negative which is the underlined principle of adiabatic demagnetization. Okay, now according to Curie law आमे देखुतिला जे गोटे paramagnetic substance पाई molar magnetic susceptibility it is given by chi equal to C by T. C हेगला Curie constant. Okay, but आमे पुणी जानिछु जे chi रो वैल्यू हेगला IV by H. एटी V हेगला वॉल्यूम occupied by 1 gram molecule of the substance. So ए दुईटा वैल्यू आमे पाइला susceptibility रो इक्वेट करिबा. So इक्वेट करिकि आमे एठी I रो वैल्यू पाई गला to be equal to C by V into H by T. ये जो C by V को आमे गोटे कांस्टेंट रिप्लेस करि परिबा K which is known as Curie constant per unit volume. ताले I रो वैल्यू पाइला परे हमरो दरकार del I by del T at constant H. So यार वैल्यू आसी गला minus K by T square into H. So ये जो वैल्यू टा हमें पाइला del I by del T ताको रिप्लेस करिबा इन इक्वेशन 92 so that dt रो वैल्यू आसी गला this much. एबे फर्दर करिवार कोन अछि एठी हमें T रो टर्म जेते अछि ताकू गोटे साइड को आनी आसिला. ओके बाकी तक टर्म आर पटे रहिला इंटीग्रेट कर दबा. ओके फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल टेम्परेचर आउ इनिशियल टू फाइनल टेम्परेचर माने फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड ऑन टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ. ओके सो ए हिसाब रे हमें लिमिट सेट कला इंटीग्रेशन रो याकू एबे इंटीग्रेशन काढिले देखो as you can see Ti or Tf these are the initial and final temperature of the sample before and after demagnetization. So at the end हमें result पाइला Tf square to be equal to Ti square minus K by Ch into H square. Okay,
So এটা আসিলা আমার main equation টা. Now let us see what are the conclusions that can be drawn. First one, the temperature of the paramagnetic substance decreases on decreasing the magnetizing field H. Okay, because এটি जो উপরে আমি equation টা পাউଛୁ, as you can see, Tf square minus Ti square যদি করিবা এটা নেগেটিভ আসিব to be equal to minus k by Ch into H square. Okay, so it is indicated by this negative sign of Tf square minus Ti square. Second point, greater is the initial field H, lower will be the initial temperature T. Okay, and greater is the temperature fall. Okay, so initial field magnetic field टा आमे जेते बेसी करिबा सेते हिसाब रे हमरो temperature टा कमी जिवो. And it should be noted that the quantity K जोटा कि नीचो आमे Curie constant per mole. So जदि आमे 1 gram of paramagnetic substance বা salt नौचु ताले K would stand for Curie constant per gram. Okay, आया को आमे TS diagram माने temperature entropy diagram रे भी देखि परिबा. So as you can see in this figure, एठी आमे temperature T को नीचो in terms of Kelvin along x axis और entropy S को नीचो along y axis. दुईटा magnetizing field constant नीचो आमे एठी H1 and H2. H2 को आमे एठी 0 रे सेट करिचु. Okay, because final field टा एठी 0 ही रहिबो. तेणु एठी देखो जो arrow अछि AB, this one. Okay, this arrow AB is representing the change in entropy during the isothermal magnetization, माने at constant temperature. Okay, and this arrow shows the decrease in entropy of the substance because एटी A रो B को कले entropy obviously decrease करूची. Okay, from H equal to 0 to H equal to H. Okay, আচ্ছা, now if the field is switched off, okay, এটা switch on কথা দেখিলা, switch off করদেবা যেতেবেলে তাহলে substance এবে adiabatically demagnetize হব, so that the temperature will be reduced, while during this process entropy will remain constant, so that এটি ইয়াকু আমি arrow BC, this one, এই arrow হিসাবে আমি represent করি পারিবা. And during this process of adiabatic demagnetization, the temperature will be of the order of 10 to the power minus 4. Okay, so 10 to the power minus 4 order जाए आमे temperature को पाई परिबा. Okay, and the main hurdle माने main problem टा एठी कोन हुए जे এই method रे is the measurement of such a low temperature. एते low temperature को पुनी measure करिवार अछि ना केते value आछि, आउ एई problem को आमे sort out करि परिबा by using this Curie law, which is chi is inversely proportional to T, that is susceptibility is inversely proportional to the temperature, and assuming the validity of this Curie law, and if the susceptibility of the sample is measured, then Curie temperature hegala Tc to be equal to C by chi. Okay, also known as the magnetic temperature. ताको एबे हमें easily calculate करि परिबा. So knowing the value of this Curie temperature, the thermodynamical temperature T can be evaluated. Okay, and the temperature measured by this method is of the order of जेमति हमें ऊपर देखिला 10 to the power minus 4 Kelvin. आउ ताठु भी हमें डाउन को जाई परिबा up to 10 to the power minus 6 Kelvin. Kemti na by making use of nuclear magnetism. Okay, but it should be remembered that the absolute zero can never be attained in actual practice. এটা গোটে বহুত হি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট. absolute zero temperature ଆମେ theoretically ଦେଖିଦେଲା ଯେ ସବୁଠୁ minimum temperature ହେଉଛି absolute temperature होची 0 degree Kelvin, which is the absolute zero temperature. Into practically it is not possible to obtain this 0 degree Kelvin temperature, or absolute zero temperature can never be achieved experimentally or practically. Okay, तार पाखापाखि up to certain degrees of order जेमति कि एठी हमें देखुछु 10 to the power minus 4, 10 to the power minus 6 এই order पर्यंत हमें पहुंची परिबा, किंतु 0 degree Kelvin पर्यंत हमें practically पहुंची परिबा नहीं. Okay, so this is all about your cooling due to adiabatic demagnetization. Thank you.